So we are inside the all new HS now. Yes. And you can feel the interior is now more comfortable. Yes. Premium. It is premium. Start the vehicle. We can see a very beautiful start animation. So starting with the interior, पहले मैं interior को explain करने से पहले इसकी philosophy आपको समझाना चाहूँगा. जिस तरह गाड़ी का exterior aggressive stance में, the interior is entirely different. Interior is designed to be simplistic. Beauty. Simplistic with symmetry. तो अगर आप अपने left hand से देखें, the right hand, it's a very balanced kind of approach. Exterior से जो चीज़ element ये bring in करती है is the piano back styling. You can see on the center and in the middle part is exactly. So गाड़ी आपको welcome करती है. You can see an unconventional design of steering wheel, but basically the steering wheel is in the design of the MG logo. Okay. You have your cruise control on the left side and your instrument cluster control on the right side. यही control आपके instrument cluster को भी control करते हैं और आपके infotainment को भी control करते हैं. Okay. Then you have your driver fatigue monitoring camera, जो कि आपके fatigue को भी monitor करता है और आपके focus को भी monitor करता है. There are two big screens in the car, 12.3 inch each. The one is your instrument cluster, the other is your infotainment screen. Simplicity की अगर बात करें, the car has 5 physical buttons to keep things simple. Front defogger, rear defogger, hazards, AC on, and then a home button to control your screen. Moving to the center part, you have your 2 USB ports, one for your data control, one for your charging. The gear shift lever is electronic. ये आपको piano black की styling मिलेगी with some brushed aluminum finish. आपको hill descent control का बटन मिलेगा, your parking brake and your auto brake hold. In the center is your wireless charging and then is your armrest with some storage. In back there is ample storage in the car as well. So there are door bins here available and your glove box is Also a lit. light. Okay. Coming to the top, the sun visor, they have flaps and they're also Yes. lit. It's very beautiful design. जो आपकी एयर वेंट्स हैं ये आप देख रहे हैं seamlessly इंटीग्रेट होते हैं Yeah. into the piano black. Then you have your speakers. गाड़ी में 8 स्पीकर्स मौजूद हैं, giving it the oomph of the sound. Seats आपकी अगर मैं बात करूँ तो this is a 6-way powered driver seat with 4-way electric lumbar control. Previous generation में it was a 2-way manual lumbar. Now it is a 4-way electronic lumbar. The passenger seat is 4-way electric. The seat cushioning has been improved. अब ये 5-layer cushioning के साथ आती है which gives you a very comfortable feel inside. And what about the controls or control panel on your right? So the control panel is for the, controlling the mirrors and your side mirrors को fold करने के लिए retract करने के लिए और you have one touch windows all across with anti-trap function. Okay. ये आपका start stop button है. So let's dive into the screen because that's Yes. the main brain of the car. So you have your tile style which has your CarPlay control. You have climate control. It's a dual zone climate control. Then you have your multimedia and your navigation. And if you swipe left, then you have your whole detailed screen. Like your smartphone, आप इसको swipe down करेंगे तो there are quick shortcuts to set the brightness, to set the multimedia volume, telephone volume and the voice control volume. Then you have your other shortcuts जिसमें आप पार्किंग ड्राइव्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं. MG आपको 2 दिख रहे होंगे, MG Pilot Custom और Tailgate. MG Pilot Custom I am going to explain you later. Tailgate इसलिए कि there is no physical button for operating the tailgate. You can operate the tailgate from here. Okay. And the tailgate is also improved. Now it's with soft closing. Right side where you have all the shortcuts. Okay. So let's go with all the settings. So first screen is your status which tells की गाड़ी किस नेक्स्ट सर्विस कब है, बैटरी वोल्टेज कहाँ है. देन इज योर क्लस्टर, क्योंकि आपके पास सामने इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है. इस इन्फॉर्मेशन क्लस्टर को आप 3 तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं. यू फर्स्ट इज योर स्पीड प्रायोरिटी जिसमें आपकी स्पीड आपका सेंट्रल फोकस है. देन इज योर मैप प्रायोरिटी जिसमें स्पीड आपको टॉप पे दिखेगी एंड नेविगेशन आपके सेंटर पे फोल्ड है. थर्ड इज इंटेलिजेंट ड्राइव जिसमें स्पीड टॉप पर है. इंटेलिजेंट ड्राइव कैमराज जो है वो अगली गाड़ियों की मूवमेंट को और आपको अगले ऑब्स्टिकल्स बता रहे होते हैं. You can also, जो आपको राइट साइड पे इन्फॉर्मेशन दिख रही है, if this is distracting you, you can turn on the immersion mode and it will turn off all the information. तो आपके पास सामने सिर्फ एक क्लियर स्क्रीन रहेगी. There is your MG Pilot जिसमें आपके पास ड्राइविंग असिस्ट में there is basic cruise control, then you have adaptive cruise control and there is intelligent cruise control. So intelligent cruise control and adaptive cruise control में difference ये है कि intelligent cruise control जो है, intelligent cruise assist जो है
वो टू सम वॉट लेवल गाड़ी स्टेयर भी करता है. यू हैव टू प्लेस योर हैंड विद स्टीयरिंग, बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये गाड़ी को स्टेयर भी कर लेगा. Like lane keep assist. लेन की बसेस के साथ मिलकर काम करता है. Okay. And it is intelligent. It is one level up from the adaptive cruise control. Okay. Then you have speed limit recognition, front collision assist, which gives this alert. इसमें भी हर बार हमें फ्रंट collision assist बंद करना पड़ेगा अगर विद इन सिटी चला रहे हैं तो. क्योंकि front collision assist and all the systems are part of the NCAP safety, तो आपको उसको हर दफ़ा टर्न ऑफ करना पड़ेगा. लेकिन one good thing about the new MGHS is कि इसमें आप हर लेवल की सेटिंग्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. And then once you have customized it, you can save it on your custom button. Okay. You can long press this custom button, वो उसको सेव कर लेगा. And what you have to do when you ever you sit in the car, आपको इसको ऑन करने गाड़ी को, उसको स्वाइप डाउन करना है और एनजी पायलट कस्टम सेलेक्ट करना है, तो ये आपकी लास्ट कस्टम सेटिंग को अडॉप्ट कर लेगा. Okay. So all the level 2 ADAS functions are there. Then if we talk about the convenience set, so the car has 3 levels of memory seats, so you can save the seat. Then there is easy entry and exit. तो अगर जब मैं easy 3 options. three memory settings. 3 memory settings. Okay. The screen also controls your front fog lights, rear fog lights, and all the functions are controlled from here. Then if you go down, you can see that there are 3 drive modes available: comfort, normal, and sport. Okay. Then regenerative braking, which was one of the pain points in the last generation. Now we have addressed it with, you have 2 regeneration levels, low and high. You can set up on the setting. And the last is the power source, कि आप गाड़ी को EV मोड पे चलाना चाहते हैं या सुपर हाइब्रिड चलाना चाहते हैं. Also you can see 2 buttons on the steering wheel. ये कस्टम बटन्स हैं. इन दोनों को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि गाड़ी में कौन सा फंक्शन करें, ताकि आपको हर दफ़ा मेन्यू के अंदर शिफ्ट ना होना पड़े. लास्ट इज योर ड्राइविंग सेटिंग, जिसमें आप स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं, स्टीयरिंग मोड को अपने साथ सेट कर सकते हैं, और टोइंग मोड इज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कार on the trailer. Last option is the 360 camera. The car has 360 camera with transparent chassis, Okay. so you can see beneath the car, and the camera's quality has been improved a lot, so you can see from all the angles where one of this. So and the mirror and the cameras, definitely when you're reversing, automatically reverse camera on हो जाता है. When you're parking in the front camera on हो जाता है. Previous generation में we missed out on the front parking sensors. Now the car has front and rear parking sensor. Plus they also tell the distance. Okay. So up to 30 centimeters तक they can tell you the distance. Below 30 centimeters, then it asks you to be careful now. One additional thing we are offering now is the iSmart functionality. iSmart जो global specs में सब में आता है, तो हमारे पास पाकिस्तान में भी अब iSmart आएगा. The app you can download on your phone and you can pair your car with it. एंड आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, गाड़ी का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इवन इफ देयर एनी इंट्रूजन इन द कार, कोई गाड़ी में ज़बरदस्ती उसको ऑन करने की कोशिश करता है, तो यू विल गेट द सिग्नल ऑन योर फोन एज वेल. Okay. Okay. So there are 8 speakers available, Bluetooth, Android Auto, all forms of connectivity. So battery, what's the battery size for this? Sir, बैटरी का हम जाएँ तो you can see the battery is Yes, this is 81% and 112 kilometers. 112. That means if you want to see the battery state, then you can come Yes. to this And screen. plus, you can see the car also has V2L. Wow. 6.6 kilowatt V2L available. Visual is available. Yes, V2L, you can buy out V2L cable as a separate accessory. It's not sold with the car, but you can use the car to power your all-in-one from 220 volts.